Hello everyone. Today I am going to tell you the syllabus and some important questions of the subject juvenile delinquency, which is one of the subjects of LLM. So to begin with, the very first chapter, it is introductory chapter which introduces the concept of child in Indian Constitution and Indian Penal Code. Then you have to study what is delinquent juvenile, who is a neglected juvenile, the overall situation of children, young person in India, and also with reference to the crime statistics of the crime by and against the children. Second chapter includes determining factors of juvenile delinquency, which includes differential association, anomie, economic pressure, peer group influence, gang subculture, class differentials. Third chapter is about legislative approaches, which includes the legislative approaches during the late colonial era, the Children Act, legislative position in various states. Then you have to study the whole lot of Juvenile Justice Act, its constitutional aspects, the distinction between the neglected and the delinquent juveniles, competent authority जिसमें कि JJB और CWC वगैरह की स्टडी है आप में, processual safeguards for juveniles, powers given to government, community participation as envisaged under the Act. Fourth chapter is all about Indian context of juvenile delinquency, which includes the child population percentage to the total sex ratio, urban rural or rural urban. Then you have the neglected, below poverty line, physically and mentally disabled, orphans, destitutes and vagrants category of juveniles. Laborers in organized industry जैसे कि जरी, कारपेट, बीड़ी मेकिंग, ग्लास, और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि डोमेस्टिक सर्वेंट, शॉप्स, इस्टेब्लिशमेंट, रैक पिकर्स, फैमिली ट्रेड, इसमें जो बच्चे लेबर्स की तरह एम्प्लॉय किए जाते हैं उनकी स्टडी है ये. द डेलिक्वेंट with respect to number, sex ratio to adult crime types, offenses committed, recidivism, rate of increase, background, drug addicts, as considering the victims of violence, sexual abuse, battered, killing by parents, of criminal activities like bootlegging, drug pollution as a response of protective approach. Chapter number 5 consists of judicial contribution, which includes SAL, that is social action litigation, which is concerning juvenile justice, salient judicial decisions, role of legal profession in juvenile justice system, implementation, which includes institutions, bodies, personnel, recruiting and funding agencies, recruitment, qualification and salaries or fund as respect to the JJB or CWC and other organizations. The other responsibilities of every agency and person: coordinating among related agencies, accountability, annual reports and accessibility of public to the juvenile justice institution जिसमें कि shelter home, observation homes आदि आते हैं. Rights of children according to old syllabuses: Declaration of Rights of Children, children rights in India, child rights and with respect to police, इसकी भी स्टडी करनी है. साथ ही साथ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज जिसमें कि स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स, हेल्थ न्यूट्रिशन, ICWS स्कीम्स, ग्रेजुएट एड, कंपलसरी एजुकेशन, रोल ऑफ कम्युनिटी, फैमिली, वॉलेंट्री बॉडीज़, इंडिविजुअल्स, ये सारा था भाई साहब डिटेल सिलेबस. और अपेंडिक्स में साथ में जो आपको थॉरली स्टडी करना, दैट इज़ द JJB एक्ट 2013. देखो JJB एक्ट पहला 2000, फिर 2006 का अमेंडमेंट है, फिर उसके बाद 13 का भी है, फिर 14 का भी है. द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो कि 2009 में आया था. तो ये सारा है डियर फ्रेंड्स द सिलेबस ऑफ
जुवेनाइल डेलिक्वेंसी विच इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ LLM। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में और जानकारी दे रही हूँ। सो बी स्टे विद द वीडियो। चलिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने पहला क्वेश्चन, हु इज़ अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन भारतीय संविधान के हिसाब से चाइल्ड किसको कहते हैं? एंड द इंडियन पीनल कोड, इन दोनों में जो चाइल्ड की डेफिनेशन है। ऑल्सो डिफाइन अ चाइल्ड एज पर इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों के हिसाब से चाइल्ड की परिभाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल लॉ एंड व्हाट आर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर देम इन इंडियन पीनल कोड। तीसरा क्वेश्चन, अ जुवेनाइल इज डेलिक्वेंट is not arrested but taken into custody, not sentenced but committed, and his record is supposed to be the part of civilian files and not criminal files, is discriminatory and violative of Article 14 of Constitution of India. Do you agree with this? If not, justify the constitutional value of Juvenile Justice Care and Protection Act 2000। तो इसमें जुवेनाइल डेलिक्वेंट है अगर, तो उसके क्या डिफरेंसेस होते हैं पूरी प्रोसीडिंग्स और उसकी हैंडलिंग में एज कम्पेयर टू द अदर एडल्ट ऑफेंडर्स। तो ये पूरी बात इसमें आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ ऑन क्राइम एंड एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया। एंड क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ अ नेग्लेक्टेड जुवेनाइल। नेग्लेक्टेड जुवेनाइल से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेग्लेक्टेड जुवेनाइल अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, एक्सप्लेन। दोस्तों ये चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, डिस्कस फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी विथ रिगार्ड्स टू डिफरेंशियल एसोसिएशन, इकोनॉमिक प्रेशर, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, gang culture and class differential. Question number 3 is about poverty is one of the major reasons of delinquency. You have to discuss. Differentiate between neglected and delinquent juvenile, differential association and anomy, gang subculture and class differential. Question number 5 is define juvenile delinquency. Who makes them juvenile delinquent? Their environment, upbringing, lack of education, poverty or society and others. Discuss. Explain the juvenile delinquency in international scenario with reference to the child population percentage, total sex ratio, neglected below poverty line, physically and mentally disabled orphans, destitutes, vagrants in urban and rural areas. Question number 7 is define juvenile delinquency and discuss the determining factors of it. Suggest the legal remedies to solve this problem. अब आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ जुवेनाइल डेलिक्वेंट इज नॉट अरेस्टेड बट टेकन इनटू कस्टडी। देखिए ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 पे भी था, वही सेम है। सेकंड इज, हाउ द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द नीड ऑफ इट्स प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड इज, salient features of Juvenile Justice Act 2000. Fourth question is, what is the object of JJA, Juvenile Justice Act? Discuss the safeguards available to a juvenile under the Act and community participation in this regard. How the basic human rights of juvenile in conflict with law are having been secured by Juvenile Justice Care and Protection Act 2000. You have to discuss this. Question number 6 is, discuss the function of various institutions handling juvenile delinquents under the JJB Act 2000. Question number 7 is, how does Juvenile Justice Care and Protection Act 2000 secure the basic rights of juvenile delinquent? You have to discuss. Question number 8 is, describe the competent authorities and institutions for handling juvenile in conflict with law, जिसको कि delinquent juvenile भी कहते हैं आप।
and for the children in need of care and protection under the Juvenile Justice Act 2000. Children in need of care and protection इसको हम कहते हैं neglected juvenile. Critically explain the working system of Juvenile Justice Board JJB and compare it with regular criminal courts. ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका. और क्वेश्चन नंबर 10 says explain the working of CWC यानी कि Child Welfare Committee. Question number 11 is how the rehabilitation and reintegration of a child has been ensured under the Juvenile Justice Care and Protection Act 2000. Explain. Question number 12, make a critical evaluation of functioning of various correctional institutions for juveniles. Write down the legislative attempts to protect the juvenile delinquent. Question number 14 is what are the provisions of section 63 of the JJ Act to handle juvenile in conflict with law and children in need of care and protection. Question number 15 is about what are bail and probation provisions of juvenile. Discuss the procedural safeguards provided to the juvenile by the Juvenile Justice Act. Now you are seeing question number 1 of chapter 4. Discuss the child labor in India. What are various legal efforts which have been undertaken to prevent it and how far they have been successful. Next question is discuss the type of offences committed by delinquent and reasons for recidivism. Also discuss the causes for increase in number of delinquents. Question number 3 is evaluate the juvenile delinquency in Indian reference amongst organized sector of labours. To what extent has the unorganized sector contributed to give